यहाँ से you can start visualizing. My arm is interacting, skin of my arm is interacting with the physical environment, is breathing, is surviving, and is creating what is called organ system. Many organs combine to make an organism. I as an organism is a system. So organisms, I interacting with my own kind, I interacting with humans, and thereby creating what is called population system. अब यहाँ पर terms apply करेंगे. Population का definition लिख रहे हैं. Before I write the definition of population, energy and matter is produced and transported in all the categories. And now be cautious for a while or keep on writing with me, then the things becomes easier for us to understand. I want to use population. How do I define population? It is total number of individuals of same species. Total number of individuals of same species. Total number of individuals of same species forms the field of study of ecology that is called ecology. Now these are the terms that comes up in examination and I'm just getting stuck up. ecology versus, अब दूसरा term भी लिख देते हैं फिर समझा रहे हैं, sin ecology. What is sin ecology? दोनों ही ecology है. अब मुझे next term तो ecology ही पकड़ना है. अब sin ecology क्या होगा? Sin ecology is identified to be community study. So what is biotic community? Carefully understand, I'm writing it here. It is population of different species living together and sharing the resource, interacts with a biotic component, leads to the development of ecosystem. हमें तो इकोसिस्टम पढ़ना है ना, श्रिंक कर दिया, सब कुछ लिखो और जल्दी से गो अहेड. आपके सामने डायग्राम बनाए, इसके बाद गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. A.G. Tansley gave us the definition of ecosystem. But what is ecosystem? Ecosystem is highest hierarchical biological system. How many biological systems exist in biosphere? 6. Gene system, cell system, organ system, organism system, population system, and ecological system. Money ecological system will be comprised of population system, organism system, organ system, cell system, gene system. Go ahead, go. By multiple gene systems will combine to make a cell. Multiple cells will combine to make an organ. Multiple organ will combine to make an organism. Multiple organisms will combine to make a population. Study of population in ecology is called what? Ecology. I'm learning only goats. Which type of ecology I'm studying? I'm learning only lion. Project Tiger is what we mobilized in India in 1972. My focus of the study is only tiger. Which type of ecology I'm studying? But what makes it more rational? Sin ecology. Reason. Ecology is where you have to talk about link. Because I as an organism will not be surviving on my own. I need to have certain physical environment with the living environment. Have you understood it, class? So I'm shrinking it off. हमारा introduction का first page ready हो गया. What are we learning? Environment. What are we learning? Ecology. But बेचारे ecology का तो अभी तक definition ही नहीं आया. अभी आता है. What is environment? Environment is my surrounding. Surrounding that is influencing the life of an organism, whether it is living or it is non-living. So environment is divided into 4 realms: lithosphere, atmosphere, hydrosphere, and biosphere. Biosphere is a life-bearing sphere because biosphere is a narrow zone of contact of land, water, and air. Variable combination tends to create variable habitat. What is habitat? Habitat is subset of environment which is occupied by an organism. My habitat can be aerial, I'm a bird. My habitat can be water, I'm a fish. My habitat can be land, I'm a mammal. It is all, mammal can be fishes also. I'm humans. So very clearly, I can have any type of habitat, and that habitat is combination, subset of environment, because it will have a variable combination of different types of physical and living conditions. As soon as I take biosphere, a life-bearing sphere, it's a complicated biological system. Who gave us this? Odom. Odom says biosphere is a complicated biological system which incorporates at least 6 biological hierarchies. Each hierarchy is adding to the next.
So gene as a biotic component, cell as a biotic component, organ as a biotic component, organism as a biotic component, population as a biotic component is interacting with abiotic factors to develop food, energy, and matter and system. All these combined is ecological system. So first definition of ecosystem we have derived. Give me a confident go ahead. Ecological system is highest hierarchical biological system. Second point definition we are done with. Ecological system gives us the scope to study sin ecology. एकदम जल्दी जल्दी से हैंड रेस करना है, ठीक है? अब इकोसिस्टम का भी डेफिनेशन लेते हैं और इकोलॉजी का भी डेफिनेशन लेते हैं. इकोसिस्टम का डेफिनेशन is credited to Tansley. So what I do is I just remove out this part of the block, let the name of the scholar remains, and I get on here. ठीक? अब ध्यान से देख. First, ecology. So ecology is basically a subject. Ecology is a discipline. Ecology is a discipline. The discipline which actually studies interactions. So the diagram that you have just created a minute back, can you recall that interaction is between biotic and abiotic factors? And it has got multiple ranks, at least 6 ranks we have taken into account. So ecology is interaction. Interaction between biotic, abiotic factors and the systems that they create. So this interactions can be divided into 2 categories, and that will take our study further. It is among organisms. अब ना मुझे जल्दी जल्दी से terms बता देना बच्चों. Among organisms and organism with physical environment. So when I'm picking up one organism and physical environment, true false बोल देना. I might be wrong. अगर wrong है तो false बताएंगे, नहीं तो true बताएंगे. If I take interaction like this, I'm studying auto ecology. Yes, no. Hand raise करो जल्दी जल्दी. इसलिए auto ecology को हम species ecology भी बोलते हैं. इस तरह के throwaway marks question आ जाते हैं examination में फंस जाते हैं. और among organism मतलब आप biotic community के बारे में बात करोगे ना. Because when we are living together, sharing resources, supporting each other's existence, it automatically gives me the reference of what? Sin ecology. And जब आप sin ecology की बात करते हो तो it is ecology of the community. तो species ecology और community ecology मेरे ख्याल से हो गया काम आसान. So ecology is a discipline. Ecology is a subject. Ecology is a subject that attempts to study sin ecology or ecology. By default, sin ecology is more comprehensive because every sin ecology will be comprised of, true false batana class, every sin ecology will be comprised of auto ecology, but every auto ecology may not be comprised of sin ecology. True false? True false. Shabash. True. Now you have to take up the understanding of this, that my study of ecology by default is focused towards sin ecology, that is community ecology. I'm not aloof of auto ecology, that is species ecology, but I'm more concerned with sin ecology. So मेरा key term आ गया sin ecology, जिसको आप community ecology भी बोल सकते हैं. I think this is done. And now when I take up the reference of sin ecology or community ecology, what is the term that automatically comes into my reference? It is ecosystem. So ecosystem, I'm not writing what we have learned with the diagram. Ecosystem is highest hierarchical biological system. Ecosystem is comprised of gene, cell, organ, organism, and population system. So it is sin ecology that is by default comprised of auto ecology, that we are all aware of it. So when I talk about ecological system as a definition, which was given to us by T.G. Tansley, 1935, it goes like this. What is ecosystem? It is a biological system that includes all biotic community. You know the meaning of the term biotic community now. Of a given interacting, diagram ko recall karo as you are writing, with physical environment, generating flow of energy, thus creation of biotic structure. So what is ecosystem truly gets comprised of? It is comprised of certain components and it is comprised of linkages. Components and linkages. हैंड रेस कर देंगे तो हमारी स्टडी आगे बढ़ेगी. एक बात हमेशा याद रखना, इकोसिस्टम विल नेवर चेंज.
I mean, functioning of ecosystem, fundamental principles of ecology never change. It will remain the same. Whether your ecosystem is Pacific Ocean, the largest oceanic ecosystem, whether your ecosystem is a desert ecosystem, Sahara Desert or Great Indian Desert, where your ecosystem is mountain ecosystem, or it is an aquarium in your living room, fundamental principles of ecology is not going to change. So once you have learned this fundamental principle, it is only that you have to fit in the adaptation and nothing else. Am I given a confident go ahead by all of you? एकदम थ्रो अवे मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हिच ऑफ देम आर करेक्ट एंड व्हिच ऑफ देम आर नॉट. सो ये बेसिक डेफिनेशन को दिमाग में रखोगे तो आराम से काम होता है. अच्छा, अब क्या करते हैं, हम इस डायग्राम का एक बार सपोर्ट लेकर फिर इस डायग्राम को रिमूव कर देते हैं. हमने इस डायग्राम से ये जज किया कि इकोसिस्टम इन्वॉल्व्स बायोटिक कम्युनिटी. बायोटिक कम्युनिटी इज इक्वल टू स्टडी ऑफ सिनिकोलॉजी. तो सिनिकोलॉजी का तो मतलब हो गया ना कि मुझे बहुत सारे स्पेसिमेंस को लेना पड़ेगा. टेक एग्जांपल, आई एम वेजिटेरियन इन माय डाइटरी कल्चर हाइपोथेटिकली. सो फॉर माय सर्वाइवल आई एम डिपेंडेंट ऑन प्लांट. I eat plant to survive. On daily basis, I am generating my biotic excreta, which is decomposed by decomposers. Eventually, I'll die. My dead remains will be decomposed by decomposers. Without my interaction with plants or decomposers, can I survive? Yes, no, batao. So, difference between population, that is autoecology, and biotic community, that is synecology, is that in synecology you have to talk about which are the biotic constituent. Goat bhi hai, plant bhi hai, insect bhi hai, humans bhi hai. So you have to talk about those biotic components. Yes or no? So biotic components bhi padhne padenge, abiotic factors bhi padhne padenge. तो components के कितने हिस्से बन गए? एक बन गया biotic, hand raise कर देना भाई, और दूसरा बन गया ए बायोटिक. अब बायोटिक तो कम्युनिटी है, सो उसमें फिर आपके पास प्लांट भी होने चाहिए, कंज्यूमर्स भी होने चाहिए, तो हम उसको डिमार्केट करेंगे. एंड लिंकेजेस, ये जो लिंकेजेस के हमने यहाँ पर इंटरैक्शन का लिंक बनाया, इसके डायमेंशंस को पढ़ेंगे. ठीक है, अब हम इसको रिमूव कर रहे हैं. आपके पास ये वाला डायग्राम है, जब जरूरत पड़ेगी तो आप इसको ओपन करके देखेंगे. अब बहुत ध्यान से नोटिस करते जाओ और पिकअप करते जाएंगे. आई एम क्रिएटिंग सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज. एज आई क्रिएट दिस, I just want to be more judicial with my space. So be very cautious of what we are learning. Biotic structure, where I have got components. अब components को हम कैसे justify करें? Components को हम justify करेंगे components of ecosystem. Ecosystem के components को हम divide करते हैं दो पार्ट में. एक है biotic component और दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट. ठीक है, पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर लिंकेजेस के बारे में बात करेंगे. अच्छा, जब हम बायोटिक कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं तो वी डिवाइड देम इनटू टू प्रिंसिपल कैटेगरी. एक को प्रिंसिपल कैटेगरी, सब कैटेगरीज पर हम इवेंचुअली डेवलप करेंगे. एक को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ और एक को हम बोलते हैं हेट्रो. ऑटोट्रॉफ्स आर प्रोड्यूसर्स, हेट्रोट्रॉफ्स आर कंज्यूमर्स. ऑटोट्रॉफ्स कैन हैव टू टाइप्स. एक होते हैं केमोट्रॉफ्स और एक होते हैं फोटोट्रॉफ्स. जो फोटोट्रॉफ्स होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं. केमोट्रॉफ्स are not primary producers because phototrophs tends to support consumers. Consumers are dependent on primary producers for food with a star mark, क्योंकि कंज्यूमर का एक स्पेशल कैटेगरी भी हम मेंशन करेंगे. ठीक है, अच्छा, कंज्यूमर्स की कैटेगरी को दें तो वी हैव herbivores, carnivores, omnivores and star mark decomposers. Decomposers को हमेशा एक अलग कैटेगरी में रखना चाहिए, but they are not the producers, so they can very well be fitted into the category of heterotrophs. आपने अगर ये लिख लिया है तो आप हमें जल्दी से गो अहेड देंगे. एग्जाम्पल्स भी डाल देते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए. वर्म्स, काम्स, ग्रीन प्लांट, थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी. हर्बीवोरस प्राइमरी कंज्यूमर, कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर, ओमनीवोरस कैन बी बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी. डिकम्पोजर्स अभी रिजर्व में, उसको रहने दो.
हैंड रेस कर दो जल्दी से कॉपी करने के बाद। अब ध्यान से सुनेंगे। इकोलॉजिकल सिस्टम और इकोसिस्टम is the study of synecology, which is the study of biotic community. I've understood that biotic community is all the different species that are living together, sharing resources, habitat, interacting with each other, helping, interfering each other's existence. वो सारी चीजें हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। So biotic community, the synecology, gives me the possibility to learn both producers and consumers. Who are producers? Producers are those biotic constituents who are capable of producing food, energy, and matter. They produce food, energy, and matter and self-feed them. So I'm producer because I'm producing food, energy, and matter, and I'm autotroph because I'm self-feeding myself. Every producer is autotroph, every autotroph is producer. Give me go ahead. Synonymous term. But every producer is not primary producer. For me to be primary producer, I must be capable of feeding heterotroph. Chemotrophs don't feed heterotrophs. Why? You have to give me a few minutes. If we reach there today, I think we'll reach there. I'll answer it. Otherwise, by default, it will come tomorrow. 2 minutes ke liye rukna. Which are chemotrophs? Chemotrophs are those producers who produces food, energy, and matter by the process of chemosynthesis. Unlike photosynthesis, chemosynthesis do not require sunlight. I produce food, energy, and matter in the absence of sunlight. I don't need sunlight. So chemotrophs are attaining their name from the process called chemosynthesis. They are multiple varieties of worms and calms. Will be appropriately handling them once I reach up that habitat. अभी जरूरत है इसलिए जज करना जरूरी है. Chemotrophs producing food, energy, and matter by the process called chemosynthesis. They are producers, they self-feed them, but they don't feed heterotroph. That is the reason they are not prime producer. So it goes like this. All autotrophs are producers, all producers are autotrophs, but all autotrophs are not primary producers. Who are primary producer? Green plants. Green plants produces food, energy, and matter by the process of photosynthesis. That is the reason they are called phototrophs. And photosynthesis requires sunlight as a mandatory thing. Without the availability of sunlight, it is difficult for us to imagine photosynthesis. So photosynthesis, the process by which I am producing food, energy, and matter, gives me the name phototroph. I am green plant. I'm producing food, energy, and matter. I'm producer. I'm self-feeding myself. I'm autotroph. And I feed consumer also. That makes me primary producer. Give me confident distinction, clarity now. अब क्या करो? Chemotrophs को hiding में डाल दो. जब जरूरत पड़ेगी दोबारा से लेकर आएंगे. अब chemotroph हट गए. हम chemotroph के बारे में बात नहीं कर रहे. Now we are talking about phototrophs. Phototrophs are autotrophs. Phototrophs are producers. Phototrophs are प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को जब हेट्रोट्रॉफ कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करे, माने आप मान लीजिए कि यहां हमने एक गोट को इमेजिन करा. सो गोट इज डायरेक्टली फीडिंग ऑन प्लांट. सो गोट क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर. व्हाट इज हर्बीवोरस? Herbivores are those consumers which directly feeds on plant. That is the reason we call them primary consumer. They are dependent on their food. They depend on primary producer for their food, energy, and matter because they don't produce. They are consumer. अब इसकी जगह अगर हम यहाँ पर ले लें lion, so lion is not directly feeding on primary producer. Lion will eat goat. Goat has eaten grass. So lion is consuming primary producer passively. Give me hand raise. Does lion is secondary consumer? Herbivores are those consumers which directly feeds on primary producer. Carnivorous, which passively feeds on primary producer. Getting it or not? It's feeding. It's feeding. And what will be the definition of omnivorous then? I can be correlated with both passive or direct dependent humans. Humans have got both carnivorous and herbivorous feeding. Yes or no? I hope it is comfortable.
So who are herbivorous? Primary consumers. Why do we call them primary consumers? Because they directly feed on primary producer. Who are carnivorous? Secondary consumers. Why do we call them secondary? Because they passively feed on primary consumers. And omnivorous, humans, लिख देते हैं यहाँ पर. बहुत सारे other हैं, like different varieties of apes are identified to be omnivorous. I mean, they can be in the captivity, they can be fed on meat and etc. But largely the apes are herbivorous when they are in wild. So we'll get plentiful examples. Don't worry about that. So omnivorous. Comfortable hai? Go ahead, dijiye. Why decomposers are required to be taken as a distinctive category? Because decomposers are not directly feeding on primary consumer. Decomposers कर क्या रहे हैं? Decomposers अपना food stuff केमोट्रॉफ से भी ले सकते हैं, फोटोट्रॉफ से भी ले सकते हैं, और सारे हेट्रोट्रॉफ से भी ले सकते हैं. यस और नो. इनकी कैटेगरीज के बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे. अभी जब हम लिंकेजेस के बारे में बात करना शुरू करेंगे. समझ में आया? इसलिए अभी के लिए इनको ना एक अलग कैटेगरी काउंट तो डीकम्पोजिशन में ही करते हैं. आई मीन दे आर कंज्यूमर, दे डोंट प्रोड्यूस फूड, एनर्जी एंड मैटर, but a special category. What is the reason they are special? I'm just coming on there. Are we comfortable with ecological systems, biotic community? My biotic community is comprised of producers and consumers with the special type of consumer called decomposer. What makes decomposer special is that it can feed on chemotroph, phototroph, heterotroph, every. बढ़ जाए आगे. अच्छा, अब देखो abiotic. अगर मुझे कंपोनेंट की बात करना है तो एबायोटिक के बिना काम खत्म नहीं होगा, और अगर एबायोटिक को ऐड करना है तो क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? चीजें तो बहुत सारी, आपने सारी चीजें पढ़ी हैं इन योर स्टडी ऑफ क्लाइमेट, बट द प्रोमिनेंट वंस है ना, तो उनको हम ले लेते हैं. जो सबसे प्रोमिनेंट एबायोटिक फैक्टर होता है जो रेगुलेट करता है बायोटिक कम्युनिटी को, वो है टेम्परेचर. टेम्परेचर के साथ आप सनलाइट को ऐड कर सकते हो. दे कोरिलेट, बट सनलाइट को हम ब्रैकेट में लिखना पसंद करेंगे. टेम्परेचर मेरा प्रिंसिपल डोमेन है, स्टार मार्क कर देते हैं. सनलाइट को आप साथ में ऐड कर लीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम टू इट. ठीक. उसके अलावा हम इसमें स्टार मार्क करके दूसरा लेते हैं सैलिनिटी, बिकॉज रिमाइंड योरसेल्फ दैट व्हेन आई टॉक अबाउट आवर प्लैनेट एज ब्लू प्लैनेट, we have got maximum of water as ocean water. So salinity, आप salinity के साथ ब्रैकेट में water लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर let it be a secondary factor. And then you can also add nutrient. Nutrient can be any type of nutrient. It can be dissolved nutrient in water. It can be the soil nutrient, because I can have multiple categories of habitat. Land habitat भी हो सकता है, water habitat भी हो सकता है. ठीक है, मेरा component का flow chart ready हो गया है. अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पूछेंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे. आगे बढ़ना है तो हमें go ahead दे दी. शाबाश. अब क्या करें? कंपोनेंट्स तो समझ में आ गए, तो इनको हटा देते हैं. अब कंपोनेंट्स को एनलार्ज करते हैं लिंकेजेस के साथ. By ecological system is highest hierarchical biological system. It involves the interactive link of organisms, syn ecology, with its surrounding, and these interactive links can have 3, 5 dimension. 3B, 5B दोनों important है. तो अब हमने पार्ट 1 पढ़ लिया, अब हम पार्ट 2 पर जा रहे हैं, लिंकेजेस पर जा रहे हैं. So linkages gives me how many links? Abiotic, biotic, biotic, abiotic. ये दोनों थोड़े से आसान वाले काम है. C थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए उसको जानबूझकर लास्ट में पढ़ेंगे. बायोटिक, बायो, सुनने में सब एकदम सेम लगे. ये गया अडेप्टेशन के साथ, प्रोडक्शन के साथ, ये गया डीकम्पोजिशन के साथ, और ये गया फीडिंग एंड नॉन फीडिंग लिंक. मतलब एक्चुअली आपको पढ़ने हैं 5 इंटरएक्टिव लिंक. समझ में आया? लिखते 3 है और सब सुनने में एकदम रिदमिक लग रहा है. ए बायोटिक, 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 ए बायोटिक, सब तो सेम ही लग रहा है पर अलग है. एबायोटिक बायोटिक के 2 पार्ट हैं. बायोटिक एबायोटिक का 1 पार्ट है, बट डीकम्पोजिशन में हम सैप्रोफाइट, रैप्टर्स, डेट्रीवोरस सबके बारे में पढ़ते हैं, बट वो प्रोसेस एक ही है डीकम्पोजिशन. हैंड रेस कर देना, हो गया है. तो हाउ मेनी लिंकेजेस वी हैव टू टेक इनटू स्टडी? 5. बढ़ जाए आगे, टर्मिनोलॉजी समझनी है. ठीक है, 1 by 1 हैंडल करते हैं.
and will be taking up the factors of the things separately. So till the time I can maintain it, I'll maintain it, and then I'll be removing it. Abiotic has got part 1, adaptation. What is adaptation? I am a biotic constituent. I can be an organism, I can be community. Am I not adapting to my physical environment to survive? अगर adapt नहीं करेंगे तो survive नहीं करेंगे. Darwin's origin of species. It is not strong specimen. It is not intelligent specimen. It is the most adaptive specimen that survives. The natural selection process gives me hand raise. So जब adaptation की बात होती है तो आप किसके साथ adapt करते हो? आप अडेप्ट करते हो फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, है ना? तो फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ आप कैसे अडेप्ट कर रहे हो? ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट लाइक दिस. आई एम एन ऑर्गेनिज्म एंड आई एम अडेप्टिंग टू माय फिजिकल एनवायरनमेंट. सो हो गया ना किस तरह का इंटरैक्टिव लिंक. ए बायोटिक, दिस इज माय फिजिकल एनवायरनमेंट, दस आई एम अडेप्टिंग. हैंड रेस कर दो. अडेप्टेशन कैन बी अप्लाइड टू ऑल ऑर्गन. प्रोडक्शन विल बी अप्लाइड ओनली टू प्रोड्यूसर. अगर कन्विंस्ड हो तो जरा हमें गो अहेड दे दो. हम बाकी सबको हटा रहे हैं, हम पहले इनके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. हटा दिया, जल्दी से गो अहेड दे दो अब हमें जल्दी. बायोटिक लिंक. Abiotic link is physical environment and biotic community. If I talk about all organisms, I can talk about adaptation. If I talk about production, by default I have to talk about producers only. Production में consumer क्या करेगा? समझ में आ गया है? तो दोनों कैटेगरीज इंपॉर्टेंट हैं. इनको आप एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको इन तीनों को पढ़ना है. आई वॉन्ट टू बिगिन विद अडेप्टेशन. ध्यान से देखते जाना, लिखते भी जा सकते हो हमारे साथ साथ, फिर हम जल्दी से समझा देंगे. कुछ टर्म्स पिकअप करने. अगर मुझे अडेप्टेशन की बात करनी है तो मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है वो टेम्परेचर है. ठीक है. Temperature gives me eurythermal versus stenothermal organism. दूसरा है salinity. Salinity give me euryhaline versus stenohaline organisms. इसके साथ हमने 2 वेरिएंट ऐड कर लिए थे, उनको भी ऐड कर लेते हैं. जैसे हमने कहा कि आप माइनरली ले सकते हो ऑफ लाइट, सनलाइट टेम्परेचर के साथ एसोसिएट कर दो, और salinity की जगह वाटर ऐड कर दो. So we can take those expressions also. इनको भी ऐड कर लेते हैं और उसके बाद फिर जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे. तो when I talk about light, we take the distinction between heliophyte and sciophyte. ठीक है, ये terms आपको पता होने. And water में hydrophytes, ये secondary demarcation. Primary demarcation तो आपका first. इसी से हम terms derive करेंगे. ठीक है. अच्छा, यूरी दोनों जगह आया, स्टेनो दोनों जगह आया. यूरी और स्टेनो को कैसे डिस्टिंग्विश करें? यूरी का मतलब होता है बिग रेंज और स्टेनो का मतलब होता है स्मॉल रेंज. ठीक है. तो I am an organism that can survive in the temperature range that can be from -50 degrees to 50 degrees of temperature. My habitat can have this 100 degrees Celsius of temperature range. Which type of organism I am in my adaptation? Eurythermal कि स्टेनोथर्मल? आप समय नहीं लगना चाहिए बच्चों, जल्दी जल्दी से बता दो. यूरीथर्मल की स्टेनोथर्मल? बिग रेंज का मतलब होता है यूरी, तो यूरी करें कि स्टेनो करें? यूरी. Uri organisms are the organisms that have got bigger range of survival. Steno organisms are the organisms that have got extremely small range of survival. तो अगर टेम्परेचर में आप यूरी एंड स्टेनो टर्म का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके टर्म्स क्या होंगे? यूरी थर्मल, स्टेनो थर्मल. और वही अगर आप सैलिनिटी में अप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? यूरी हलाइन एंड स्टेनो हलाइन. हैंड रेस कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़े. मतलब आई एम दैट फिश विच कैन सर्वाइव इन बिग रेंज ऑफ सैलिनिटी. याद आ रहा है सैलिनिटी? सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सी सॉल्ट्स. I can survive in salinity of 320 parts per thousand to 34 parts per thousand. कौन से ऑर्गेनिज्म हो गए? यूरी हलाइन.
I will survive only in 34-35 parts per thousand. I'll become steno organism, stenohaline. आ गई बात समझ में? तो ये तो 4 डिटरमाइनर्स होते हैं एबायोटिक फिजिकल एनवायरनमेंट के, जहां से हमने डिस्टिंक्शन ले लिया यूरी और स्टेनो। अब क्या करते हैं, इन सबको हटा देते हैं, यूरी और स्टेनो टर्म का एक पेयर को जिंदा रखते हैं और जरा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। Adaptations demarcate organisms into 2 bold categories. Adaptations demarcate organisms into 2 different categories. Which are these 2 different categories? एक को बोलते हैं रेगुलेटर्स, एक को बोलते हैं कन्फॉर्मर्स। जो रेगुलेटर्स होते हैं वो होमियोस्टैटिस मेंटेन करते हैं। So let me write the term here. That is the reason regulators can give us thermoregulation and osmotic regulation. Thermoregulation is attained by different types of processes. अगर आप अपने आप को इमेजिन करो, so summers में sweating से और winters में shivering. And when I take up the reference of osmotic pressure, it basically is the physiological process that organism uses water balance. Mane it is applied to aquatic organism. Excessive gain or loss of water नहीं होगा। आप किसी भी तरह के सैलिनिटी जोन में हैं, आप अपने ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करेंगे। लिख लिया है तो जरा हैंड रेज करो। आई एम वेटिंग फॉर योर गो अहेड। अब एकदम रिलैक्स करके रिमाइंड करने की कोशिश करो। When I talk about abiotic-biotic link part 1, it is about adaptations, and I can apply adaptation to all organisms. That is the reason I have fast forwarded way written all plants, heterotrophs, mammals, सब कुछ लिख दिया। सारे organisms adapt करते हैं physical environment के साथ, and that is the reason they survive. So adaptation is that abiotic-biotic link that can be applied with all organisms. Done. Adaptation is related to abiotic factors, which essentially includes temperature and salinity. Done. That is the base of which we classify Uri and steno organism. Uri organisms are those organisms which can survive in bigger range of temperature and salinity, and steno organisms are those organisms which survives in smaller range of temperature and salinity. Go ahead, दे दो, शाबाश। अच्छा, इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने कहा all the organisms can be demarcated into 2 categories called regulators and conformers based on homeostasis. अब homeostasis का मतलब क्या है? Until unless you are running fever, is it not that we humans always have got a constant body temperature? Hand raise करो। fever नहीं होगा तो हमारा body temperature तो constant range पर रहता है ना। कुछ लोग थोड़े से hot blooded animals हैं तो उनका टेम्परेचर चला जाएगा 95 डिग्रीज फ़ारेनहाइट से 100 पर हम फीवर को शुरुआत मानते हैं, बट नॉर्मली ये रेंज है 95 डिग्रीज टू 100 डिग्रीज फ़ारेनहाइट इज व्हाट इज द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर ऑफ आवर्स। अब आप साइबेरिया में जाकर रहने लगोगे तो क्या आपका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 35 डिग्रीज फ़ारेनहाइट हो जाएगा? नहीं होगा ना। आपका बॉडी टेम्परेचर तो वही रहेगा। यस और नो, जल्दी बताओ। तो आप कौन हैं? आप रेगुलेटर हैं। All mammals are regulators. They maintain homeostasis. They maintain constant internal environment irrespective of what is external environment. बाहर टेम्परेचर को -50 डिग्रीज होने दो, आपका बॉडी टेम्परेचर 95 से 100 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक रहेगा। Is that comfortable with us? All mammals are regulators. Mammals do includes fishes. Mammals are regulators. They maintain homeostasis. Do I sound correct if I make a statement? The regulators thus will be always more Uri. Regulators will thus be more Uri organism. Come on, give me go ahead. बाहर कुछ भी हो रहा हो, आप अपने आप को अंदर मेंटेन करोगे तो आपका हैबिटेट रेंज तो बढ़ेगा ही। आई थिंक दिस इज कंफर्टेबल। इसी के कंटिन्यूटी में सोच कर देखो, who are conformers? Conformers are those organisms which fails to maintain homeostasis.
बाहर का टेम्परेचर गिरना शुरू हुआ, आपका बॉडी टेम्परेचर गिरना शुरू हुआ, बाहर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लस 95% हेट्रोट्रॉफ एंड ऑल प्लांट्स आर कन्फॉर्मर। अब मुझे ना सबका पार्टिसिपेशन चाहिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एक जनरल स्टेटमेंट, एकदम बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट। Am I correct if I encounter a statement? Consider the following statement, which of them are correct or not. And the statement reads, conformers when compared to regulators will be more steno-organism. True, false, TNF, participate, true. जब कंपेयर करोगे, पर ये कह देना कि सारे कन्फॉर्मर्स हो जाएंगे स्टेनो, ये गलत है, ठीक है। तो कन्फॉर्मर्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हुए? Conformers are the organisms which fails to maintain homeostasis. तो homeostasis maintainers यहाँ लिख देते हैं fails to maintain. Estivation term इस्तेमाल होता है फिशेस के लिए, हाइबरनेशन अप्लाई होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए। आप सबको पता है पोलर बियर हाइबरनेट, लंबी विंटर स्लीप पर चला जाता है, यस और नो? नॉक्टर्नल जाता है हॉट डेजर्ट के ऑर्गेनिज्म, और माइग्रेशन खैर हम सबको पता है। सस्पेंशन हम अप्लाई कर सकते हैं एज एन अम्ब्रेला टर्म, जिसको आप एक और एक्सप्रेशन दे सकते हो। तो आई राइट इट हेयर, यहाँ पर आई थिंक आई कैन मैनेज इट हेयर, यहाँ लिख देते हैं। सस्पेंशन का एक और डायमेंशन है जिसको बोलते हैं डोरमेंसी। डोरमेंसी को हम अप्लाई कर सकते हैं प्लांट्स। अगर आपने लिख लिया है तो प्लीज हमें जरा गो अहेड दे दीजिए। कैसा भी क्वेश्चन आएगा, यू टेक माय वर्ड, यू विल नेवर फाइंड योरसेल्फ स्टक अप एनीवेयर।